Hello and welcome back to the Football Parliament podcast, your one-stop destination for all your football debates, discussions, and opinions. And today with me, I have again Adidev Bhaiya, and who we all know is just an expert in the game of field. His sayings, his tactics are always pleasing to hear. Thank you, Adidev Bhaiya, for coming again. थैंक यू एक्सपर्ट थोड़ा ज्यादा बोल दिया बट ठीक है एज अ लाइक आई एम हमारे लिए जस्ट अ तो फैन भैया ऑफ द गेम एक्सपर्ट तो वही गया. I'm just a fan of the game trying to learn a little bit more about it, but yeah, anyways, No, always a pleasure to be here. for your expertise, I have some opinions because जो हमने last time पे meeting करी थी, the points हाँ that you made कि this might be the concerns for our own club Chelsea, that is what we were हाँ seeing. एक point था Alonso का that we will discuss in हाँ detail आगे जाके. डिटेल You were the हाँ हाँ only one because यहाँ पे players थे Alonso को captain band arm band दे दो सब बना दो. Alonso is the best player for our club and you हाँ were the one कि हाँ Alonso पे trust नहीं है मुझे. जो कर रहा है हाँ कर लो हाँ Alonso पे trust नहीं है. हाँ और वो हमने last हाँ मैच में देख लिया. Why करेक्ट Alonso पे trust नहीं है. करेक्ट Before करेक्ट करेक्ट starting अरे with that, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. yeah, go on, yeah, let's discuss it seamlessly properly. Exactly. Right, तो हाँ One team that was looking as the favorites for all the competitions that they were in, a major roadblock हम्म has blocked all the pathways for them. और ये stage was worrying because any team that plays in such a good form, उसके लिए अगर ये एक ऐसा roadblock आ जाता है, so the campaign generally derails. Last time we saw कि Liverpool was running favorites for the title, but एकदम से campaign derail हुआ and they were also lost their momentum. So Chelsea हम्म fans were worried कि ऐसा हो सकता है and this was something a situation that was happening. So being a Chelsea हम्म fan, कैसा था ये रोलर कोस्टर वीक आपके लिए? तीन बड़े मैचेस. Oh, अच्छा है कि हम लोग we got a reality check against some impressive teams. Not against Zenit. Zenit, I think, was a below average result for us. But apart from that, against Aston Villa as well, Aston Villa was still अगर point मिले थोड़े तो लेके जाना चाहिए. But then definitely talking about City and Juve, I think we got a reality check against two of the best teams in Europe. I will still consider Juventus in that category because if they have got Allegri in the mix and Allegri heading the helm at Juventus, he knows how to grind results. He knows how to get results. The table of Serie A tells a very false story currently because if you look at Juve's current run in the Serie A, after their Malmo game in the Champions League, I think they haven't lost a single game since that particular point of time. Yesterday, also against Torino, they eked out a very impressive 1-0 result against Torino away. And getting a result against Torino away is a pretty tricky fixture. So I feel they have done very well. Manuel Locatelli has been an absolute dream signing for them. He's just fit into the jigsaw really well. And what happened with I'll I'll get to City. I'll first get to City probably why because when we defeated them in the Champions League, I've ये मैंने बात भी की है तेरे से बात की है मैंने I've talked to in other pods as well. Uh, yes, it was a good game from us, but it was also down to Pep's team selection. That was the demise for City. When it came to this particular game, he almost took it upon himself कि भाई मुझे revenge लेना है. He took it very personally, and it was showing in the game because all of our defenders were pinned. We were pinned in our own half by City's aggressive press. You know that that aggressive press can't continue for the whole of 90 minutes, probably because of the fact that if you do that, then you're just opening yourself up to a lot of exhaustion. City game, right. So when it comes to the City game, we are pinned back in our own half for since almost the beginning of the game. City's aggressive press was very prevalent, but you cannot continue with that press for the whole of 90 minutes, primarily because yes, it leads to a loss of concentration at times, and it also uh, a lot leads to a lot of exhaustion because exactly you can't be too aggressive for the whole of 90 minutes. So इसलिए City for some phases relieved that certain aggression in the first half. For a 10 to 15 minute mark, we saw Chelsea
on the front foot for at least 10 minutes. Not exactly front foot, but they had the ball. They had the time to Possession, yeah. actually recycle possession. That's what they were doing. Second half, maybe like for 10 minutes, we saw that thing as well. So I think Pep was very smart in doing that, because he just kept things organized when he's not pressing. And when he's pressing, just go gung ho in actually pinning them completely back. So I think it's more down to Pep's tactics rather than us playing really bad in that particular game. So that is one thing. And although I would really feel that, we don't have a player who can really break the press with Defense. one through Exactly. pass. Exactly. I think there's a lot of over reliance on Kovacic for that particular role. But if Kovacic is marked out of the game, or if Kovacic is actually closed out of the game in such situations, there is nobody else to take that mantle up. Yes, Mason Mount is definitely a shout there, but even I think Mason Mount was not there in that game. No, I think we he wasn't. Mason Mount wasn't there in that game. We were playing with three three man midfield of Kante, Jorginho, and Kovacic, if Exactly. I'm not wrong. Yes. And that is exactly what we are missing, because I think if we are pinned completely back in such a press, we need a person who can definitely give a through ball and have these Timo Werner in behind runs, or a Lukaku in behind run. And another thing that we have been very overly dependent on in these two games is, not in these two games itself, but in a lot of our games, is trying to build the play around Lukaku. Yes, exactly. Because I understand that Lukaku is the statement signing that we have made in this transfer window. And yes, Lukaku is one of the best strikers currently in the Premier League, to be absolutely honest. But you don't really need to do that every time, because if you are doing that every time, the opponent just guesses you out. I mean, the opponent just the opponent you become very hard to predict. I mean, you become very easy to predict, and Yes. that's exactly what has been happening, because uh, every time हम क्या देख रहे हैं कि the ball comes to Lukaku has his back to goal. He tries to turn, but the defender doesn't let him turn, because the defender knows that the ball is going to come to his feet. All the defender knows that the ball is going to be floated up top, and Lukaku के साथ मुझे थोड़ा सा टाइट रहना है, उतना भी टाइट नहीं रहना ताकि वो टर्न लेके वो चले जाए मेरी तरफ से, Exactly. बट आई नीड टू बी like conveniently tight to him, so that I can defend those balls out, and my team can have possession back again. Definitely. They win the second ball, and my team can have the position back again. This is something that we didn't do in the Southampton game. Yeah. That is why when people were complaining about the fact कि लुकाकू के पास, some people complaining to me that लुकाकू के पास ज्यादा टचेस नहीं है, लुकाकू is not being involved in the game a lot, तो मैंने बोला अच्छा है. Acha, exactly. Like it's good. It's good that he's not involved in the game. It's good that Tuchel is kind of thinking about a plan B here. And yeah, that is something that really impressed me. And But before definitely City I'll game. हाँ yeah. जी जी बोलिए complete करो. नहीं, I'd like to get your opinions before I jump on Yeah. to another point regarding Chelsea. No, talking about City game जो मैंने भी उसके मैच के टाइम पे नोट्स बनाए थे. The first thing तो हमने देखी वो 3-5-2. See for me Hmm. वो टॉटनहम के अगेंस्ट 3-5-2 चला, लेकिन that was Hmm. not a dominant 3-5-2 because हमने जो गोल्स मारे वो ओपन प्ले से नहीं मारे थे तीनों. मतलब एक तो 90th मिनट विनर था और दो हमने कॉर्नर से मारे या फिर लेटर कॉर्नर से मारे जो अपने लास्ट गोल भी मारे. मेरे हिसाब से वो डोमिनेंट Hmm. नहीं था. 3-5-2 बिकॉज जो कोवा जॉर्जी और कांटे की मिडफील्ड हो जाती है, दैट मेक्स अस वेरी defensive side. And against a team like City, you needs a style of aggression on the field in the midfield जहां आपको ball win भी करनी है and you have to carry that ball forward. कांटे जोर्जिनो और कोवा में आप ऐसा प्लेयर नहीं देखते जो बॉल कैरी कर सके. समथिंग मेरे हिसाब से प्लेयर लाइक माउंट और रूबन लॉफ्टस चीक जो करते हैं, the tricks that they have or the things that they have in their locker, वो आपके पास इन तीनों मिडफील्डर्स के पास नहीं है मेरे अकॉर्डिंग. Hmm. साथ में जो आपने लुकाकू की आइसोलेशन की बात कही, मे बी अब एवरी टीम इज प्रेडिक्टिंग कि लुकाकू के अगेंस्ट एक लो ब्लॉक अगर आप बना लो, इफ यू आर आइसोलेटिंग लुकाकू तो चेल्सी की आधी गेम वही स्टॉप हो जाती है बिकॉज दे डू नॉट नो वेयर टू पास. फिर वो हमारा फ्रैंक लैम्पार्ड गेम आ जाता है कि कॉर्नर्स पे डालो और होप करो क्रॉसेस से, क्रॉस एंड होप जो Cross हम, inshallah. हाँ एग्जैक्टली जो हम लैम्पार्ड के टाइम से हम होप करते हुए आ रहे थे कि होगा. और लेकिन लैम्पार्ड के टाइम पे क्या था, हम बैक फोर थे तो वी वर अ बिट अटैकिंग, तो वी वर ओपन डिफेंसिवली एज वेल. लेकिन अब हम बैक Hmm. फाइव हैं तो हम
मिडफील्ड में भी हमने तीनों प्लेयर ऐसे डाल दिए कि हम बिल्कुल डिफेंसिव हो गए, दो अटैकिंग प्लेयर हम्म, पूरी फील्ड पे सिर्फ, और वो भी दो अटैकिंग प्लेयर जो ड्रॉप डाउन नहीं कर रहे बॉल्स रिसीव करने हम्म, के लिए। तो मिडफील्ड और अटैक में एक गैप था जो वी वर मिसिंग। और ऑब्वियसली द प्लेयर जो फिल हमारे अकॉर्डिंग कर सकता है वो है मेसन माउंट। ही इज द बेस्ट लिंक अप बिटवीन मिडफील्ड एंड अटैक अकॉर्डिंग टू मी। ही कैन कम बैक एंड टेक द बॉल, और ही कैन इवन प्ले पासेस इफ ही कैन वन ओवर द लाइन और ओवर द डिफेंसिव लाइन। बट वन प्लेयर जो हम्म, मैंने इस गेम में एग्जैक्टली मिस करा वो था पुलिसिक। If you remember the last game we had in the Premier League, the last season, जब पुलिसिक ने एक अकेला गोल मारा था फर्नांडिनो की मिस्टेक के बाद, correct. was Fernandinho if I'm right, पुलिसिक was the main problem to Pep उस टाइम पे, क्योंकि वो बंदा जितना उनपे aggressively push कर रहा था and the way he could cut in the defense line, वो हमारी टीम में अभी हम्म, कोई नहीं कर सकता था। अब ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो मैन सिटी के डिफेंडर को 1v1 ड्रिबल में हरा सके मेरे अकॉर्डिंग। टीमो वर्न इज द प्लेयर जो स्पेसेस बना सकता है और रन्स बना सकता है। ही इज नॉट एट ऑल गुड विद बॉल ऑन अंडर हिज फीट। सेम है लुकाकू का। लुकाकू इज मोर ऑफ अ फिजिकल प्लेयर, उसको पता है टर्न्स कैसे लेने हैं, उसको पता है ड्रिबल कैसे करना है, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट रिलाई ऑन लुकाकू टू ब्रेक द लाइंस, वी टू होल्ड अप द प्ले फॉर यू एज वेल। मतलब लुकाकू से कोई बॉल रिसीव करने के लिए नहीं था मेरे अकॉर्डिंग उस गेम में। एंड वन थिंग, अलोंसो एक्सपोज हुआ उस गेम में। पेप वेरी मच एक्सपोज अलोंसो उस गेम में। योर ओपिनियन, बिकॉज हमने ही पहले बात करी थी कि अलोंसो इज नॉट द राइट गाय फॉर दिस टीम। हाउ डू यू फील अबाउट अलोंसो? Yeah, I was seeing. I saw this coming. I know there were a lot of other people who are still telling me that Alonso. When you are up against low block teams, Alonso is the best bet. I mean, it may seem like that, but considering how Chile performed yesterday as well, yes, very silly penalty to give away. But again, I will credit Livramento as well. Exactly. Livramento is again. This is. I'll get to that as well. But I think Alonso and Chile का ये जो debate है, I'll always stick to Chile primarily because even if it's a low block, Chile will give you the security to cover on the counter in a low block because the primary I think the primary theme of a low block for a lot of teams is to keep that defensive shape and then to hit on the counter. Counters. So Nuno, although Nuno's season with Tottenham has been pretty bad so far, but I think Nuno against City adopted that same tactic. I mean, keep a low block and hit them on the counter. And I think so. What Chelsea tried to do is again a low block, but hitting them on the counter के लिए उनके पास कोई बॉल प्रोग्रेसर नहीं था. There was no, I think Matthew Kovacic को छोड़ के कोई बॉल प्रोग्रेसर नहीं था. Jorginho had an absolutely horrid game, कोवासिच को बहुत अच्छे but तरीके से मार्क कर रखा था मेरे हिसाब से। yeah, yeah, इफ एक फ्रंट थ्री का प्लेयर उस पे नहीं आ रहा था तो मिडफील्ड का प्लेयर उस पे था ही था। इवन De Bruyne was yeah. helping to cover a player like Kovacic or Jorginho alternatively. Yeah. So I think if you talk about the Juve game as well, so Juve game may be what Chelsea were doing against City and what they intended to do. To be very honest, that's what Juventus did. I mean, they kept a low block against us, and then in the counter they were just telepathic with their passing because one touch, boom, boom, just like switch flank and trouble our defense, trouble the shape of our defense, and just try to get in crosses inside. I think they could have scored 4 if I'm not wrong. ठीक है, But they could have सिटी scored. और चेल्सी सिटी और यूवे का गेम वाज प्रीटी डिफरेंट ऑन कॉन्ट्ररी ऑन चेल्सीज पार्ट, क्योंकि एक गेम में यू वर हैविंग नन ऑफ द पोजीशन, मतलब सिटी आपको बॉल छूने ही Hmm. नहीं दे रहा था। इट वाज सो Hmm. डोमिनेंट परफॉर्मेंस सिटी। और लेकिन जो यूवे का हमारा फर्स्ट हाफ था, हम बॉल छोड़ ही नहीं रहे थे, वी वर कंप्लीटली इनटू देयर Hmm. बॉक्स, लेकिन I स्टिल वो। think that's what they allowed us to be यस in that एग्जैक्टली, zone. दैट वाज They टिपिकल allowed us इटालियन साइड। that they डिफेंस are करो। they have full faith in their defense. So they had full faith in their defenders blocking the crosses coming inside, or because their blocks were exceptional in that particular games. Like some of their blocks were truly exceptional. It was like reading a playbook of defending. It was amazing how they were defending in that particular game, and I think they realized they played to their strengths. They know that they have really good pacey people on the counter. They have Chiesa, they have Cuadrado, they have Bernardeschi. So they have good people on the counter. They used those unka strength sahi se, and that's what we saw. I think we are lucky to actually get away by actually conceding just one goal because we could have conceded 4. And to be very very frank with you, so I think that again is a massive reality check to us because we need to think about कि अगर कोई low block पे है
how do we crack that low block completely? Do we have enough squad depth in each possession, or do we have enough squad depth in an attacking transition to probably counter a low block? And ठीक है. अब लो ब्लॉक And काउंटर करने के लिए, इफ यू रिमेंबर लास्ट सीजन माउंट का जो गेम था अगेंस्ट एथलेटिको, एथलेटिको इज वन ऑफ हम्म, द बेस्ट टीम्स व्हेन यू टॉक हाँ, अबाउट डिफेंसेस. वो जो हम्म, टर्न एक माउंट ने करा था, जो फर्स्ट लेग में उसने गोल मारा था टर्न करके, हम्म, दैट इज समथिंग जो माउंट की एब्सेंस हमें फील कराता है, बिकॉज माउंट इज द हम्म, ओनली पर्सन जो ट्रबल कर सकता है डिफेंसेस को मेरे हिसाब से इस टाइम पे. हमारे में और हम्म, कोई प्लेयर नहीं है जो ब्लॉक्स को तोड़ सके गोइंग वन ऑन वन अगेंस्ट अ डिफेंडर. दे विल ऑल ट्राई टू true, पास और सेफ गेम खेलना चाहते हैं. जॉर्जिनियो तो मुझे true, पता नहीं उसने लास्ट टाइम शॉट भी कब लिया था आउटसाइड द बॉक्स. व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही correct, डिड टुक अ शॉट, या कोवासिच भी ऑफ लेट ही उसने स्टार्ट करा, उसने एक या दो गोल मारे. कांटे इज yeah, आल्सो, उसको जब इंस्ट्रक्ट करा गया टुकल से, वो गालियां खा के आया कि तुझे मारना है, तो उसने मारा था. हम्म, वी गॉट द गोल correct, अगेंस्ट टॉटनहम फ्रॉम हिम आल्सो. So that is where correct, इस गेम में आई फेल्ट कि माउंट की एब्सेंस वाज अ मेजर इशू. एंड आल्सो द रोल हैवर्ड्स और जिएश ने प्ले करा. हैवर्ड वाज हम्म, इन अ गुड फॉर्म अकॉर्डिंग टू मी मैच से पहले, लेकिन हैवर्ड्स ने उस no, गेम में no, सिर्फ, no, नहीं इस गेम no, से पहले no. जब वो सिटी के अगेंस्ट आया, ही ट्रांसफॉर्म्ड Since द गेम. international break, या since सिंस international इंटरनेशनल ब्रेक break, यू कैन से, या since international break, Havertz has not been quite good since the international break. Ziyech hasn't been good so far throughout this season. So Ziyech के साथ मेरा ये चीज रहा है कि Ziyech is again 28. He's एग्जैक्टली. 28. You can't be a moments player at the age of 28. या ठीक है, you can't be appreciated as a moments player at the age of 20. At the age of 28, you're supposed to have peaked. या At the age of 28, you're supposed to have peaked, yeah, almost at the summit of peaking. एग्जैक्टली, ठीक इट है, इज द प्राइम you जिसपे तुम्हें परफॉर्म करना ही है. हाँ, हाँ, exactly, you have to be extremely consistent and show us कि यही मैं करते आऊंगा. ठीक है, because Kovacic के साथ भी अभी कैसा हो रहा है, Kovacic is almost giving us a 7 out of 10 kind of a performance in every game. या ठीक है, which is absolutely fine. Like that's a minimum barrier. I'm saying Kovacic can reach 9 out of 10 easily as well. I'm not denying that. ठीक है, because he's that good. उसने करा ठीक है, भी था दो गेम्स पहले, मतलब जो हम correct, हारे उन गेम से पहले था. correct. But he will never. I don't think so. Kovacic can never come below the threshold of 7 for a stretch of 3 games or या for a stretch of 2 games. Like ऐसा नहीं होगा Kovacic के साथ currently डेफिनेटली. ऐसे. Ziyech के साथ ऐसे होते ही जा रहा है. ही गोस लाइक ठीक 2 है, Ziyech 3 या फिर डायरेक्टली ही गिवन आई. या Ziyech के साथ होते ही जा रहा है. तुम एक गेम बहुत अच्छा देख लोगे Ziyech का, फिर बोलोगे कि भाई magician is in the house, and then 4-5 गेम मतलब he is just either invisible or he's just so bad. I mean, he's just very, very bad in terms of reading the game. And Okay, his he's just decision making is very, also awful in the final very, third. very, very. I think Ziyech के साथ ये चीज हुई है कि when Lampard, I think Lampard got him into the mix. Yes, he was a Lampard का era का signing. And I think उस टाइम पे हम सबको लगा था कि he will try to build a team around Ziyech. Yeah. I think Ziyech likes that. I think Ziyech likes to be in that category where the team is built around him. But what is his ठीक है, position? पहले मुझे आप ये what is his best position according to you? I think Number it's 8, 10 it's or in a a hole. winger? I think it's in the hole behind the double two strikers. So if you are probably playing a 3-4-1-2, But ठीक है, उसमें ये एक चीज नहीं करता. If you are the one in the 3-4-1-2, you have to drop down back as well and receive the ball. See, इसकी correct. pressing is very good. मैं ये मना नहीं करता. He's one of the best हाँ, pressers if you consider in the team. But you have हम्म, to carry the ball from Jorginho and Kovacic and आपको आगे forward जाना पड़ेगा. But what he does हम्म, is he generally goes into an isolation between the behind the striker as a shadow striker, या जो हम नंबर 9 कहते हैं, नंबर 9 के हम्म, पीछे वाला प्लेयर. एंड ही ट्राइज कि मुझे फीड करो बॉल. वो उसके लिए लुकाकू है ना, वो फिजिकल स्ट्रेंथ लुकाकू के exactly, पास है, हम उसको फीड करेंगे. व्हाई विल वी फीड अ exactly, प्लेयर लाइक जिएश? दैट इज माय प्रॉब्लम exactly. विद जिएश. And the number one in the in a Premier League game or in the Premier League era needs to track back. Like whoever, I know in a tactical sense it makes sense for the number one to stay ahead, and probably agar ek release point aaya and number one can then connect to the two in front of them and effect a good counter. But in the Premier League, you can't let that forward line just be as it is, and you can't like you cannot not track back. ठीक है, दैट इज at any व्हाट point of. टुकल यस्टरडे सेड कि दोनों हाइवर्ज और जिएश आउट ऑफ फॉर्म थे, इसीलिए मैं हम्म, इनफैक्ट बाकली को सब ऑन करके लाया हूं.
and I did not trust a player like Ziyech or Havertz. What an inspired substitution. What an Exactly. inspired Yesterday's substitution. game was like on point. Everything Tuchel was doing, everything I any player was doing was golden. I couldn't believe I was seeing this Chelsea, like this style of play, this Exactly. brand of football yesterday. I couldn't believe it because Southampton, yes, यार तो बोल सकते Southampton मतलब they have conceded goals, but यार Southampton are still a Ralph Hasenhüttl team. It's not like they are down Exactly. in the dumps completely. Yes, they are winless in 6. I think they are winless in 6 now. ठीक है, but defensively, I think Southampton haven't looked as exposed No. until yesterday. Never. ठीक है, उतने exposed नहीं लगे हैं Yesterday defensively. भी first half में इतने exposed, चलो you can say थे first half में, लेकिन still the defensive solidarity they had was not something जो हमने easily enjoy करी है बाकी games में. Before the international break जो हुआ था last वाला, हमने इतनी easily नहीं करी, and Man City और Man U को रुला दिया था भाई उन्होंने. Legit रुला Exactly, दिया यार. था एक गोल के, और Man City की is attacking game is always much better than any team in Europe right now. जो उनके attacking abilities है, उन उस And team को रुला देगा. वो तो show भी किया PSG against they should have Exactly. scored at least scored a goal. Like मैं तो बोला था they should have won. But To at be least very honest exactly against Messi PSG. fan खुश थे, मार दिया, हाँ, आ गया. yeah, bro. वो तो goosebumps moment था. That's a different story. Well, I was doing a watch along with Rock Baba Yeah, at that I was point of. on that watch round, मैं देख रहा Oh, था. you were there. अच्छा मैं अच्छा. गोल के हाँ बाद तो. स्पेशली आया था, मैंने कहा आदित्य देव को आज देखना है. It was a surreal moment, but we digress. So I'm saying कि when if I'm talking about this team in particular, I want to talk about the right wing back position as well, because Aspilicueta is not a right wing back. Never. Okay, I know he gave an assist yesterday, and But people neither were is telling Hudson Odoi. neither is Hudson-Odoi, but that is exactly where I'm coming to. Tony Livramento. I Exactly भाई, mean, तो इस टीम में होता तो क्या होता है इस टीम का यार. टॉनी लिवरमेंटो एंड मैं ये चीज मैं रूफटॉप से मैं स्क्रीम करते आ रहा हूँ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन. जब हकीमी के पीछे हम थे तो उस टाइम पे मैंने ये चीज, पता नहीं ये इधर भी मैंने बोली होगी, आई डोंट रिमेम्बर मच, बट मैंने ये चीज बोली थी कि भाई हम हकीमी के पीछे क्यों जा रहे हैं जब प्रॉब्ली उतना वेजेस अगर एक यूथ प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है या उससे भैया थोड़ा सा कम एक यूथ प्रोडक्ट आपने एक्सपेक्ट बोला था, कर रहा मैंने है. पूरे आर्टिकल लिख दिया इसके ऊपर. मैंने कंपेयर करे क्या दोनों के बात कर रहा है? स्टैट्स. एग्जैक्टली. मैंने अच्छा उसके अच्छा अच्छा. लीग के स्टैट्स निकाल के उसकी क्लिप्स देख देख के, क्योंकि चेल्सी की हाँ हाँ एकेडमी क्लिप्स हाँ. लेना इज नॉट मुश्किल ग्रेट. काम, इजी हाँ है. हाँ. मैंने उसके क्लिप्स देखे हैं, और द वर्सेटैलिटी दैट गाय ब्रिंग्स इज जो हमें इस टाइम पे चाहिए. लेफ्ट विंग बैक नहीं चल रहा, एग्जैक्टली. उसको डाल दो लिवरमेंटो को. स्ट्राइकर नहीं चल रहा, देख स्ट्राइकर डाल दो देख उसको. रहे हो साउथहैम्पटन पे क्या कर रहा है वो, देख रहे हो. पहली दो कल गेम्स का एक देखी. मूव देखा, मैं तुझे एक मूव बताता हूँ, ठीक है, कल का एक मूव बता रहा हूँ टोनी लिवरमेंटो को. ही लॉस्ट पोजेशन इन द अटैकिंग हाफ, ठीक है, टू विच प्लेयर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, लॉस्ट पोजेशन इन द अटैकिंग हाफ, ठीक है. वो प्लेयर उससे आई थिंक एक 100 मीटर की रेस लगाया क्योंकि वो प्लेयर बॉल के साथ चला गया, ठीक है, ऑन द लेफ्ट, ठीक है, रेस्ड अहेड ब्रो, रेस्ड अहेड. टोनी लिवरमेंटो कहाँ था, मतलब फाइनल थर्ड ऑफ द पिच में था वो. टोनी लिवरमेंटो जो भागा है एंड इन द एंड बॉक्स के आई अंदर थिंक उसने वो टैकल हडसन किया ओडोय एंड था. रिलीव. आई थिंक सो हडसन ओडोय था, या फिर हडसन ओडोय के साथ वो रेस लगाया. एग्जैक्टली हडसन ओडोय के साथ द रेस प्लेयर वी लगाया कैन टोनी बेट कि वो रेस लिवरमेंटो. जीतेगा, and that too the तो gap हडसन ओडोय के पास एडवांटेज. exactly, he had an advantage. He had a massive advantage, and Tony Livermore covered that gap, and he won the ball back as well. ठीक है, won the ball back, probably went for a corner, but he defended that particular move back again. एंड आल्सो लोगों की इसकी दिक्कत थी, टीनो इज अ यंग प्लेयर, परफॉर्म नहीं करेगा भाई. चालेबा तुम्हारे आगे बचा के बैठा था इस टाइम पे. माउंट ने क्या करा था. यू आर अ टीम, सो सीखना चाहिए. तुम चैंपियंस लीग जीते ही इस वजह से हो बिकॉज़ यू हैड द एकेडमी प्लेयर्स, एंड प्लेयर्स क्वेश्चन इज डिफेंसिव एबिलिटीज. तो कौन सा एसपी और रीस जेम्स का इतने डिफेंस करवा रहे हैं. वी आर पुटिंग इन हाँ अलोंसो, तो व्हाई नॉट टीनो लिवरमेंटो. भाई, Aspie defensively was liable yesterday. I नो नो mean, नो, तो Trevor आई मीन अगर हमें जरूरत नहीं हो तो हम वी डू नॉट नीड देम, क्यों हम अलोंसो भी खिला रहे हैं ना. इन एन अटैकिंग थर्ड अलोंसो एक हमारा अटैकर बन जाता है, लेजेंड विंगर बन जाता है. Alonso winger है. Alonso is not a wing back. हाँ हाँ He's हाँ, a winger. he's a winger, complete winger है वो. He's more of a Kennedy kind of a player. कहीं He's पे an भी डाल दो. inside forward. Yeah, he's an inside forward.
He's just placed as a wing back, but he's an तो inside एट अ forward. पॉइंट कि हमारे पास, आपने स्क्वाड डेप्थ की बात करी थी, लुकाकू के लिए हमारे पास एक मेरे हिसाब से करेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है इस टाइम पे. नो वन, Hmm. आई बेग कि ऐसा ना हो कि लुकाकू इंजर्ड हो जाए, बट अगर वो हो जाएगा, हु इज द प्लेयर यू कैन फिट इन अगेंस्ट लुकाकू? मैं तो कह रहा हूँ Then we अलोंसो उड़ा go दो. then we go back to our old tactics. No, then we go back to our old tactics before Lukaku. What we बट had before बट वी Lukaku. वर अ बिट एक्सपोज उस टाइम पे कि हम नहीं मार पा रहे थे ना गोल. हमारे दैट पास वाज द प्लान भी प्रॉब्लम. नहीं है ना, प्लान प्लान भी भी नहीं नहीं है था. फिर क्यों? प्लान भी नहीं, अभी भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर लुकाकू इंजर्ड हो गया, we go back to our old self where we play Kai Havertz and Timo Werner. ठीक है, बट और we play that front three where we have Pulisic, Kai Havertz, Timo Werner. with Mason Mount in ठीक the है, midfield or Mason Mount drop. या Mason Mount in the mid, obviously Mason Mount in the mid, तो like वो क्योंकि तो फिर मतलब 3-4-3 खेलेंगे तो फिर पिवट में आ जाएगा ना मेसन माउंट, एंड yeah, मेसन माउंट एंड sorry, पिवट. yeah, Kai Havertz is obviously off color. So what I'm thinking, play center forward Timo Werner, and you play left wing Mason Mount, right wing Pulisic. ठीक है. So that is, I think we've done this also before. ठीक है, I think center forward या Timo Werner नहीं था उस टाइम पे, Kai था. So दैट I वाज अ think we've, पुलिस काई हैवर्ट्ज और माउंट का जो हमने क्रिस्टल पैलेस में आग लगा दी थी, जो हमने हाँ हाँ खोल दिया हाँ था पहले 15 मिनट में. क्रिस्टल हाँ पैलेस खोल दी थी, 4-0 जीते थे हम. हाँ, exactly. So he's going to do this if we बट don't have Lukaku. दैट इज अ प्रॉब्लम, मतलब कि स्टिल वी शुड हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम, राइट? Yeah, but I think it's okay because when you have Lukaku, right? So I'll tell you the things that I'm observing differently with this setup in our frontline press to what we were before. So with our frontline press, with Lukaku is not as aggressive as probably I would say a Pulisic is or a Mason Mount is इवन अ or a वर्नर let's इज. say or Werner is excellent in the frontline press. So when I'm talking about all of these three players, ये front three जब हम लेके आ जाते हैं, जो हमने लेके आया against Manchester City end में, I think Tuchel kind of figured that out, and that's where the things changed लेकिन यूवे because में क्यों when you नहीं have करा उसने वो, जब उसको तो हाँ फिगर वो आउट कर लिया. नहीं समझ में आया वो यूवे में क्यों नहीं किया, उससे नहीं समझ में आया, उसने वो फिगर आउट कर दिया था वो चीज, बट देन यूवे अगेंस्ट ही वाज जस्ट, आई थिंक ही वाज टू स्कैर्ड टू लूज दैट गेम. ठीक है, मे बट बी, which मे he बी did in the end. ठीक वो है, which he did in the end. फियरलेसनेस ना खत्म हो गई है. Because the thing is now when you have a front three, you are still sacrificing on a certain security in midfield or in the defense. ठीक है. So and Juve were cutting us open left, right, center because with their switches, right, flank switches, they were just doing it excellently. ठीक है. एंड टॉकिंग And अबाउट स्विचेस, एक प्लेयर की अब हमें बात करनी पड़ेगी. द गॉड इज हाँ, बैक, नंबर 18, रॉस बार्कली. Ross Barkley, what a हम लोग ball. हम दोनों ने ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर दिया लास्ट गेम में उसको. उसके Yeah, बाद तो yeah, yeah. ही इज ओवर हैवर्ड, ही इज What a ओवर ball. जिएश. What a ball. What a सब ball. गोल्डन सब्स्टिट्यूट. वो जब वो बॉल हुआ ना, जब वो बॉल दिया उसने, तो on Discord I was watching it and I think I told my friends कि ये तो यार Mason Mount, what a ball by Mason Mount. Then उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो बार्कली है. बोला बार्कली ने ये बॉल दिया है. बोले वो क्या बात कर रहा है भाई. Like मैं अपने you can कजन के साथ मैच देख रहा हूँ, उसको पता नहीं है फुटबॉल क्या होता है. ही सॉ प्लेयर uh, कमिंग, उसको नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा है. मैं कहा छोड़ दे, हमने बेचने की काफी कोशिश करी है, ये प्लेयर दिख नहीं रहा था और पता नहीं क्यों खेल रहा है. फिर उस बंदे ने ऐसी बॉल डाली. वो बंदा मुझे जज कर रहा, भाई तू लेजेंड, तू देखता है ना फुटबॉल. भाई क्या सही बोलूं में मैं. bro, can't blame him also bro because Barkley again is a unique, so you could distinguish Barkley from the 11 who are playing on the field, okay, because Barkley के वैसे वो नंगे पैर खेलता है, वैसे वो बिना बिना ये सॉक्स के वो सब ऐसा खेलता है ना, वो तो you can exactly distinguish कि ये Barkley है. बार्कली ठीक है. है, हाँ ठीक है, but then I mean Barkley, it was an amazing inspired substitution and I think RLC had a beautiful game and I think एग्जैक्टली द RLC नेक्स्ट, के द बिगेस्ट पॉजिटिव yeah, इन 3 गेम्स में वो आ रही थी. RLC had an absolutely standout game and I think RLC के वही पोजीशन पे अगर बाकली seamlessly fit हो गया ना, then I think Saul के लिए problems हो सकती हैं क्योंकि now Saul would have lesser time to accommodate to the Premier League, to adjust to the Premier League साउल because के he ऊपर प्रेशर knows. वापस आ गया. पहले थे 3 मिडफील्डर्स थे. हाँ बिली हाँ गिलमोर चला गया तो ही हैड दैट, मतलब इसीलिए हम साउल लाए थे कि बिली गिलमोर गया. लेकिन अब लॉफ्टस चीक हाँ एंड बार्कली आर परफॉर्मिंग टू द लेवल्स की साउल इज नोवर नियर. प्रीमियर yeah, लीग में तो but उसकी कोई स्टैंड नहीं Barkley है. has to continue this. नहीं, RLC is बार्कली continuing फॉर it. मी इज लाइक कि हाँ सब्स्टिट्यूट था, आ गया चला गया. हाँ, super sub. सुपर सब.
काइंड ऑफ सिचुएशन जहां आप उसको कभी ना कभी ला सकते हो इफ यू रियली वांट कि फुल अटैकिंग जैसा करना if you remember Man United and Makeda, या Federico Makeda. एग्जैक्ट या अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे लिंगार्ड कर्व करेगा टीम के लिए हो Exactly. So वैसा सीन था कल बाकी का, but if he continues like this, like there is no questions about his ability. But another player that I want to call out is Jorginho, because Jorginho had won my respect for a little while. Okay, for a little while पहले मुझे after नहीं winning थी the. इज्जत देन Uh, भाई मैं था कि बैलन डोर तो मजाक बहुत हो गया दो इसको बैलन uh, डोर इसने जिताया हमें इटली यूरोस में लेकिन इटली का अब वापस परफॉर्मेंस स्टैंड आउट यूरोस में इटली का परफॉर्मेंस स्टैंड आउट ही वाज अ वेरी पिवटल फिगर शुरू में चेल्सी के लिए बहुत अच्छा किया इन दिस पर्टिकुलर सीजन एज वेल एंड आई वाज लाइक maybe I mean yes he deserves to have opinions around him reversed but bro if you नहीं so my point is only one thing if you won the Ballon d'Or and if you are currently the best midfielder in Europe, नहीं जीता नहीं okay, वो बैलन डोर अभी मेसी हाँ नहीं मेसी वो देगा वो यूएफा बेस्ट प्लेयर है हाँ ये सॉरी तो माय बेस्ट बैड प्लेयर बेस्ट प्लेयर हाँ माय बैड जस्ट कंसिडर मेसी फैंस बैलन बात लगा d'Or दीजिए हाँ yeah guys sorry but anyways anyways the best midfielder in Europe ठीक है he is the best player in Europe ठीक है if you are the best player in Europe then you should be able to uh, you should be able to set an example in big games ठीक है you should be able to set an example in big you should be able to don the responsibility to set an example in big games your fans cannot give an excuse saying that कि bro ये तो दो गेम है इसके पहले why didn't you see any of his games these two games are probably be season defining games for Chelsea एग्जैक्टली because in these two games, if you're questioning Tuchel's tactics, if you're questioning Tuchel's character, there are a lot of people who are doing that. If you're questioning Tuchel's game reading abilities, then it also comes down to the players who are playing for Tuchel, right? And if one of those players who's playing for Tuchel is probably not probably, is awarded the best player in Europe currently, he should be able to set a semblance of an example. ऐसा कुछ भी नहीं दिखा ये दो गेम्स में इवन ऐसा ही वाज कुछ भी नहीं ड्रॉप दिखा इवन ही वाज ड्रॉप प्लेयर कह रहे हैं हाँ टुकल सेड ही वाज ओवर यूज इसलिए मैं उसको कल की गेम नहीं खिलाया बट वी ऑल नो ही वाज हाँ ड्रॉप Yeah, he was इवन dropped. ट्रू फैन की Exactly. आरएलसी में इतनी तुम्हें सब्स्टिट्यूट आके भी ऐसी परफॉर्मेंस दे दी थी 10-15 मिनट में यू न्यू जो Hmm. 70 मिनट में जॉर्जिनो ने तुम्हें नहीं दी पूरे मैच में हाँ एग्जैक्टली ओवर यूज क्या बात कर रहे हो यार अभी अभी तो मतलब तुमने बीच में तुमने साउल को खिलाया था फॉर दैट एफए कप गेम एफए यू कप गेम एस्टन विला एफए वाली कप गेम you had rested him man you don't talk about overusing him you मैं had ओवर rested him यूजिंग जो कल प्लेयर्स को बोला कि हमने ओवर यूज करा तुम रहने दो इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है यू डोंट गिव अ शिट अबाउट कि इटली के लिए वो जाके कैसे खेलेगा तुम कल खिला देते हो उसको तुम्हारे लिए 2 हफ्ते की छुट्टी है फिर तुम खिलाते हाँ ओवर यूज तो बोलो मत यू डू नॉट केयर हाँ कि इंटरनेशनली उसको क्या हो रहा है जाके इंटरनेशनल खेल पा रहा है एग्जैक्ट नहीं खेल पा रहा वो अनलेस द प्लेयर हाँ भाई रियली वांट्स कि मैं कि नहीं खेलूंगा सही में यार ऐसा तुम बोलो नहीं ये बहुत वियर्ड रीजन है ओवर यूज मैं भी बोलने वाला था बट देन दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट ओवर यूज वाली बात हम लाइक द क्लब फैंस विल नॉट केयर अबाउट ओवर यूजिंग अ सर्टेन प्लेयर एंड इवन स्टफ टुकल लाइक डज दैट नॉट केयर ये पक्का है हाँ लुकाकू का क्या है लुकाकू को तुम तो हर ऑलमोस्ट हर गेम खिला रहे हो दैट इज द लुकाकू पॉइंट को उसकी ओवर यूज नहीं कर रिप्लेसमेंट ही रहे हो नहीं है उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है तो हाँ ओवर यूज क्या वो हाँ जब से आया दिस हाँ ही इज द प्लेयर सबसे ज्यादा मिनट्स खेले मेरे हिसाब से हाँ रूडिगर से ज्यादा वो हाँ खेला हाँ रूडिगर से ज्यादा खेला है करेक्ट बट रूडिगर एग्जैक्टली भी ओवर यूज नहीं बोल सकते ओवर यूज तो रूडिगर को भी बोल सकते हो तुम एंड रूडिगर चालोबा ने इतना ओवर हाँ अरे अरे माशाल्लाह I mean Rudiger I think he's done it the second or third time this season या already ऐसा ऐसा रन वो ठीक है जोमा के बाद एंड अब वो ग्लिम्पसेस आते हैं धीरे धीरे करके ग्लिम्सेस हाँ 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 एंड बस लुकाकू जस्ट चेक कर लेता ना अपना रन तो हाँ जस्ट थोड़ा सा चेक कर मेरे थोड़ा सा बच जाता है फैंटेसी टीम का कैप्टन भी था मेरे तो ओ अच्छा लुकाकू अच्छा और रूडिगर मैंने मेरा मेरे प्लेयर बस अभी सब इन करा था मैंने बस मेरी फैंटेसी टीम बस रखा था मेरा कैप्टन आज खेलेगा बेन रामा साइड बेन रामा हाँ, नहीं मेरे पास है बंदा लेकिन हाँ still- ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट इट वुड बी अ वेरी गुड गेम getting to the point कल जब मिशन माउंट आया वन पे आई थॉट टू टॉक अबाउट दिस वो एनर्जी 100 या 200% कुत्तों की तरह भागना दैट इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट टू गिव लेकिन जो वो प्रेसिंग उसने दिखाई दैट वाज वेयर चेल्सी में एक मोटिवेशन आई पूरी टीम में कि वी कैन डू दिस गेम वी कैन हिट देम बैक हम वन ऑल के बाद भी कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइक डीन मैं कुछ नहीं बोलना चाहता माइक डीन के बारे में क्यों किसी ऑफिशियल की वो करनी
decisions against Chelsea is a trend now. लास्ट ईयर तक Exactly. हम ये गेम्स हार जाते हैं इन डिसीजंस की वजह से. टीमो वर्नर का गोल वाज अ क्लियर गोल. फर्स्ट रोमेलो लुकाको हमने बोला वो ऑफसाइड था, इट वाज क्लियर ऑफसाइड, लेकिन टीमो वर्नर का गोल वाज अ गोल. 17 सेकंड पहले हुए टैकल को लेके नहीं आ सकते कि वो फाउल था इसलिए हम गोल नहीं दे रहे. That you can't, भाई सही में भाई मैं यही चीज बोल रहा हूँ, you can't involve that move in the build up. एग्जैक्टली. बिल्डअप You स्टार्टेड that's आफ्टर एसपी का क्रॉस. हाँ या फिर इवन यू कैन से हाँ चिलवेल का, तब उसने बॉल इन डाली. इट वाज चिलवेल राइट, जो हम्म उसने अंदर पुश करी बॉल. दैट वाज हाँ द हाँ पॉइंट. हाँ उससे पहले तो कहानी एग्जैक्टली बिल्डअप था, जो तुम कह रहे हो फाउल कर दिया, ये हो गया वो हो गया. आई हाँ रियली डोंट नो. तो वो हाँ मतलब जब वो दिखा रहे थे शुरू में मुझे लगा कि यार ये तो पता नहीं एसपी का क्रॉस था ये वाला उस टाइम का बोल रहा है, देन इट मे बी जस्टिफाइड, बट उसके बाद मैं देखा नहीं यार ये तो एसपी का क्रॉस नहीं था, इस पे तो इसके बाद और 8 टचेस हुए हैं, 8 एग्जैक्टली. टचेस के बाद गोल हुआ है मतलब ये बिल्डअप कैसे हो गया यार एंड दैट ये कौन सा टैकल, रूल बुक है? क्लीन टैकल का थियागो सिल्वा, उससे ज्यादा क्लीन टैकल कभी हाँ जिंदगी में नहीं देखा मैंने. येलो हाँ कार्ड. हाँ हाँ थियागो सिल्वा का हाँ येलो कार्ड हाँ बनता नहीं था हाँ किसी भी गेम में. नहीं थियागो थियागो सिल्वा का नहीं थियागो सिल्वा का येलो कार्ड स्टार्ट्स अप था ना, फिर भी इट वाज स्टार्ट्स ऑन द अप था ना. बॉल. इट वाज ऑन द बॉल. आई नो बट आजकल तेरा स्टार्ट्स अप वाले चैलेंजेस को इट्स नॉट हिम, जब आई थिंक स्टार्ट्स स्टार्ट्स अप अप वाले चैलेंज, चैलेंज रेड कार्ड जस्टिफाइड. स्टार्ट्स अप चैलेंज रेड कार्ड, हाँ हाँ क्लियर जस्टिफाइड, स्टार्ट्स अप क्लियर चैलेंज रेड कार्ड था. हाँ 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 बट आई हाँ डिड नॉट हाँ एक्सपेक्ट माइक डीन देखा है तो वो रेड कार्ड देगा. तो किसी नहीं नहीं होप वो भी नहीं थी मुझे क्लियर तो. था, वो मुझे क्लियर था मुझे होप नहीं वो थी. तो हाँ वो तो क्लियर था, एंड व्हाट हेल्प द केस मोर वाज जॉर्जिनियो का एग्जैजरेटेड बीइंग नेमर. रिएक्शन. हाँ बिंग नेमार, जॉर्जिनो बिंग नेमार, मजा आ गया तो उसको ऐसा लगा कि अभी उसका पैर ही टूट गया. ठीक है एग्जैक्टली. तो हाँ हाँ एक तो टाइम पे तो दैट हेल्प. वरी सम भी था कि सही सच्ची तो नहीं लग गया इसको. कौन कौन एक बार तो लगा कि सच्ची तो नहीं लग गई इसके. सही में द भाई वे ही डिड दैट. सही में यस एग्जैक्टली. एंड अब कांटे की एब्सेंस, हाउ मच वाज इट हर्टिंग दो गेम्स में? Was it even hurting with Kovacic stepping up, RNC stepping up? नो एक्चुअली आई विल नॉट से उसका एब्सेंस उतना खला है हमको, टू बी ऑनेस्ट. नहीं आई डोंट थिंक उसकी एब्सेंस उतनी खली है. आई थिंक आरएलसी हैज स्टेप्ड अप रियली वेल. कोविचिच स्टेपिंग अप को कोविचिच कैसे बोलें, कोविचिच तो नहीं मतलब मतलब स्टिल कोविचिच ही मतलब रहा है. उसने एक फील नहीं होने दिया कि कांटे की एब्सेंस दिख रही हाँ है फील्ड में. कोविचिच तो कोविचिच ही रहा है. आई मीन हम्म. कोविचिच हैज बीन वन ऑफ the most consistent players for us. Abhi Jorginho fans will come on to the chat if they are. They'll come on to the chat and say कि Jorginho again one of the consistent performance blah blah. But नहीं, बिग I टीम्स में think नहीं करा उसने. RLC. हाँ बिग टीम्स के अगेंस्ट हाँ नहीं करा. exactly RLC bro. What RLC brings, what Jorginho doesn't bring to the table. Moving around the defensive half and roaming around the defensive half, trying to attract passing options. एंड दैट इज अ ठीक है फिजिकलिटी भी हो रहा था मेरे हिसाब से. जॉर्जिनो इज अ फिजिकल प्लेयर, मैं मना नहीं कर रहा. exactly. बट ही कैन होल्ड ऑन टू हिमसेल्फ. वो ग्राउंडेड रहेगा. उस पे कितने Hmm. प्लेयर्स तुम पुश कर दो. एंड द टर्न यस्टरडे ही मेड फॉर दैट गोल, आई थिंक तो कौन सा गोल था जो आई थिंक वो हाँ लुकाकू ने मिस वो करा. बहुत टर्न्स मारे हैं भाई आरएलसी, एवरी मैच में वो हाफ टर्न्स जो लेता है ना, एग्जैक्टली. वो वो जो सारी वाला हाफ वो टर्न. फॉर्म वापस आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग. फुलहैम में मुझे कभी नहीं दिखा वो, किसी भी गेम में फुलहैम की. और सीजन से पहले भी नहीं दिखा था, लेकिन अब वो वापस दिख रहा है. मे बी दिस इज द टाइम ही स्टेप्स अप अगेन इनटू द फर्स्ट टीम. I think this is the position where you should play him on a regular basis, because with Fulham as well he didn't understand what his position was. Exactly. ठीक है He was sometimes before plays as a right forward striker. striker, center attacking, number 6, And सब one जगह more खेला है. thing, जो स्ट्राइकर हम बोल रहे हैं, one thing he adds up to the game is वो लुकाकू की जगह एक और प्लेयर है जो आपको हेड कर सकता है बॉल को. He has that height, he has that physicality जो ये हेल्प करता है. हैवर्ट्स माउंट, सॉरी हैवर्ट्स, लुकाकू और आरएलसी, तीन ऑप्शन मिल जाते हैं क्रॉसेस के ऊपर, if he wanted. Yeah, exactly. And yesterday as well, I think he was not playing as a deep lying playmaker. Deep lying was, I think, Trevor Chalobah. Yeah. So Trevor Chalobah, if you play Trevor Chalobah with Ruben Loftus-Cheek, Loftus-Cheek will again get a lot of freedom to move forward, because you have a defensive-minded Trevor Chalobah behind, who's very good and who's very tall as well, imposing as well. And yesterday there was a in set pieces, I always had a certain belief कि हम definitely goal score करेंगे, because let's count the number of tall people we had in our squad yesterday. Ruben Loftus-Cheek, Trevor Chalobah, Antonio Rudiger, Christensen, Thiago Silva, Romelu Lukaku,
So you have all of these really tall people in as defenders, and you have this one excellent set piece delivery specialist like Ben Chilwell. So obviously, playing on set pieces is a great strength to have. And yesterday it just showed, because whenever we had a set piece, we were almost certainly sure that this is going to be a really good goal scoring chance, because we had so many imposing players, high, just say imposing players inside 11. So yeah. And against a team like Southampton, who last year was not conceding on set pieces. Then they had Vestergaards. They did not concede many of the goals. And McCarthy was like, if Chelsea game nahi jeeti, McCarthy was the man of the match for me. The saves he made, some of the saves that he made, Yeah, almost the yeah, yeah, Chilwell goal as well. वो yeah. वो हो गया, but he Werner as gave well. his best. Werner goal Werner was as well. something else. What he did, that strong right hand and left hand, Heart. जो that was a very good one. And that was a build up भी बहुत बढ़िया था Lukaku का वो. The backfield that he हाँ played, the no look हाँ backfield हाँ almost you can say. And Werner ने पहली बार वो heavy touch नहीं लिया था. That exactly fears me. Werner ने perfect exactly touch लिया था and he took the shot perfectly. उससे better नहीं कर सकता था Werner उस time पे. उसके घर पे सत्यनारायण की पूजा होनी चाहिए for sure. I just want to ask you one thing, पूजा पाठ से. How happy are you कि चेल्सी इंडिया में नहीं खेल रही? क्योंकि हम हर भगवान से गोल खा रहे हैं. अगर आप आईएसएल में खेल रहे होते तो हर बंदे का नाम भगवान के नाम पे. हमने जीसस से गोल खा लिया, मोहम्मद से गोल खा लिया, किएजा इन इटालियन मींस चर्च से गोल खा लिया. कल हमने सेंट्स से खा लिया, आई मीन द प्रॉफिट से गोल खा लिया. आई एम हैप्पी हम इंडिया में नहीं खेलते. एब्राहम को बेच दिया तो all the curses are एब्राहम को against us. all the curses are against us. So I think, yeah, I think we're defying the gods by being at the top of the table right now. I'm so happy इंडिया में नहीं खेलते. बस मुझे ये पता है, राम वही है शाम वही. सबसे खाते नहीं तो. अगर अगर चेल्सी का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस भी हो जाता, उस पे भी मोदी जी का आ जाता मस्त से कि हार्दिक शुभकामनाएं चेल्सी को, और मोदी जी का सबसे ज्यादा बड़ी फेस आ जाता फोटो. सामने. बड़ी फोटो आ जाती, वही चीज है. टॉकिंग अबाउट चेल्सी, अगर आप एक चैंपियंस मतलब एक प्रीमियर लीग विनिंग टीम साइड देख रहे हो, यू वांट अ 11 जो आपकी परफेक्टली स्टार्ट करे. यू नो कि अगर एक बड़ा मैच रैंडमली आ गया, यू नो कि ये 11 मेरी मैच निकाल देगी. डू यू फील दैट विद चेल्सी राइट नाउ, especially the attacking part I am saying, because defensively we know the best 5 or best 7 in fact अगर midfield कंक्लूड करो हमारे पास कौन सी है. तो यू फील कि हमारी फ्रंट थ्री पता है हमें? Good question. I think we are the victim of our own rotational policies. Yes, Pep yesterday 2.0. was again. Yeah. Yes, yesterday was again like an experiment, but it was a very successful experiment. Primarily because you're playing players in the position which suited their profiles. To be absolutely honest with you, that is something that worked in our favor. Yeah. And I think if we go with the same team for the next few games as well, I don't see any reason why we'll slip up, because everything about this team is very stable, is very good, is very fresh. It gives you a very fresh vibe to Chelsea's game. Okay, so it definitely has everything, every ingredient necessary to probably grab 3 points against the next 4 games, which are against some weak teams as well. Yeah, this is So a stretch of from December that we can easily play our games and set our best 11. इसलिए मेरा question था कि is it the best time? yeah, I think this is the best setup we need to have currently, because yeah, I don't see Kai coming into the picture anytime soon. Kai needs the international But break. I see that कि काय को आना चाहिए अब, मतलब काय should step up. अब एक सीजन हो गया है, मे बी टीमो वर्नर के जो हम वेट कर रहे थे ना कि लुकाकू टीमो वर्नर लिंक अप हम देखेंगे, दैट वाज यस्टरडे जो हमने बेस्ट देखा. इट वाज नॉट अगेंस्ट Exactly. सिटी में तो आपने उन दोनों को आइसोलेट ही कर दिया कि तुम दोनों अलग फील्ड में खेलो, हम अलग फील्ड में खेल रहे हैं 9 बंदे. दैट वाज समथिंग Because वेरी डिफरेंट. Kai will not give you those in behind runs on a consistent basis as Timo Werner. But He how will do you not see give you a that. Kai in a 3-4-2-1 or 3-4-1-2? What is the best position for Kai and what is the role you are expecting? क्यों क्या कह रहे हो? Kai, like sometimes he's used when जैसे जर्मनी में यूरोस के लिए यूज हुआ था वो, sorry, यूरोस में जर्मनी के लिए यूज हुआ था. He was one of the When best players Euros में. yeah, because he was being used as that person
who used to roam in the right spaces behind. He used to roam in the right spaces as a part of the front two. He was that one player as a part of the front two who was given an absolute license to just roam around the right half spaces. And whenever the ball used to come around those right half spaces, he just used to link up play with the striker who was up on top. So Yeah. that was something that Kai used to do. So this unorthodox way of attacking just suited the national team a lot more. But Yeah. when you come to club football, this unorthodox style may not work really well, because yes, club football again gives way is way too fluid, and other systems in club football are not as rigid as what you expect in national football as well. So इसलिए Kai could get a lot of spaces in that profile when he was actually working with Germany. And इसलिए अभी हम क्लब फुटबॉल में आएंगे तो Kai के लिए वो प्रोफाइल हम दे भी नहीं सकते। अगर हम उसको लुकाकू के अगेंस्ट खिलाए, लुकाकू के साथ खिलाएंगे एक डबल सामने, ठीक है, और उसको वही प्रोफाइल हम वापस जर्मनी में जैसा होता था वही प्रोफाइल उसको वापस देंगे, he will be found out, because England against Germany में he was found out primarily because when he was dropping in the right half spaces, left half में there was nobody to actually be progressive enough to cover those left half spaces, because even if Kai is हाँ, so Yeah. in the attacking half, if you're trying to press a person, so it's like once you have bypassed Kai in the right half, you have the whole midfield in front of you. Yeah. You have the whole midfield in front of you. So that becomes the main problem. So when you come to Tuchel as well, if you're talking about defensive stability, if you want to get attacking cohesion, तुम अटैकिंग कोहेशन डिफेंसिव स्टेबिलिटी के इस पे नहीं ले सकते हो। डिफेंसिव स्टेबिलिटी के क्या बोलते हो कि को सैक्रिफाइस करके नहीं ले सकते हो, ठीक है। सो यू विल हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम आउट, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जर्मनी वर नॉट डूइंग दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दैट वाज देयर अनडूइंग अगेंस्ट इंग्लैंड एज वेल टू सम एक्सटेंट, ठीक है। सो इसलिए दिस इज वन थिंग दैट यू कांट लेट हैपन इन द प्रीमियर लीग, बिकॉज इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल रहे हो, ठीक है। तुम द सिस्टम दैट इंग्लैंड अडॉप्टेड, most of that system is being adopted by a lot of teams in the Premier League, especially the mid-table clubs जात में perform करना चाहिए। एग्जैक्टली वही बोल रहा था, केस इन पॉइंट ब्राइटन। मैं Yeah. कल ही बोल रहा था कि पॉटर इज अ वेरी साउथगेट लाइक मैनेजर, Yeah. ठीक है। So case in point Brighton, case in point probably Burnley is like a weaker version of England, but Burnley भी एक championship level tactic ही लेके आई है प्रीमियर लीग में, and they're still surviving. I don't know how, but they're still surviving, ठीक है। but that is exactly what I'm trying to say कि सब लोग इतना adventurous tactics के साथ नहीं खेलते, and इसलिए Kai would like a team who plays with an adventurous tactic like a Leeds United or something. Bundesliga में जब खेल रहा था, he used to play against teams who have a very high defensive line on a consistent basis. Almost every Bundesliga team plays like that, ठीक है। So that is exactly why Kai could be so prolific. And अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि Kai is not a good player. He's a good player. He's a generational talent still. But to adapt to the Premier League, he's one of the Champions League, so that goes out of the same, okay? But to adapt to the Premier League is a different ball game altogether, and I still think he has a little bit in him still to probably 100% adapt to the Premier League still on a consistent basis. And I believe in Timo Werner a little bit more than Kai Havertz, primarily because of the signing of Lukaku and what we saw yesterday. I think मैंने इधर भी बोला था, मैंने पहले ही बोला था कि when Lukaku came in, the one player that I am watching out for this season is Timo Werner. So इसीलिए तो अगर मैं अपनी वो फॉर्मेशन वाली बात मतलब लाइनअप वाली बात कंटिन्यू करूं, so in the coming games if you are to predict a team against any opposition, I'm not going against a particular opposition क्योंकि फिर वो tactically setup हो जाती है चीजें, but if you're going against a big opposition, Lukaku, Werner, Mount, the best three, even if Pulisic and Hudson-Odoi are also in. But Werner को तुम राइट पे कैसे खिला सकते हो? Werner का राइट पे No, 3-4-1-2 then. 3-4-1-2, हाँ. With Chilwell on the flank rather than Alonso. No chance. Alonso. Yeah, no chance. Alonso is not coming on. Probably he'll come on against Watford. Probably he'll come on against Leeds.
probably he'll come on maybe against any of cup games he will be the player cup games में to rely yeah on, yeah and maybe it वो it important बन जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि हमारे गोल्स अगर वो टीम्स जो होती है कप गेम्स वाली, दे डिफेंड अ लॉट, दे आर रेडी फॉर हम्म, रीप्लेस एंड स्टफ, उनको कुछ नहीं है, उनको पेनल्टीज भी चलेंगी बिकॉज दे हैव अ बेटर हम्म, चांस इन पेनल्टीज. सो दैट टीम जिसमें आपको चाहिए गोल आउटपुट कहीं और से rather than your front three, उस टाइम पे you will look for Alonso. या वही होगी 3-4-1-2 जो बोला अभी तूने इन टर्म्स ऑफ हमारा अटैकिंग थ्री वुड बी मेसन माउंट इन द होल एंड आवर टू स्ट्राइकर्स अप फ्रंट भी लुकाकू वन. And one thing मतलब बिफोर एंडिंग द कॉल, वन थिंग जो इफ हम नहीं सोच रहे लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड पीछे बैठ के फ्यूचर सोच रहा है, राइट? नेक्स्ट सीजन में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, चेल्सी के लोनीज भी अगर आप देखोगे या फिर आप इनके साइनिंग्स भी देखोगे, व्हाट चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस साइड? क्योंकि अब वी आर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट एंड वी शुड टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट जो हम बिल्ड करेंगे फ्यूचर में. लोनीज लाइक गैलेगर आर परफॉर्मिंग टू देयर लेवल बेस्ट. मिडफील्ड हमारा अभी ही इतना स्टैक्ड अप है कि हमें और प्लेयर्स नहीं चाहिए. मे बी चलो अम्पाडू आई विल नॉट स्टिल कंसीडर कि एक प्लेयर है वो जो हम ला सकते हैं, बट व्हाट हैपेंस विद प्लेयर्स लाइक गैलेगर और मे बी प्लेयर अदर प्लेयर्स जो हमने बेचे हैं, या फिर वी हैव अ बाय बैक क्लॉज ऑन देम, लाइक वी टॉक्ड अबाउट लिब्रामेंटो. बट मैं आई एम सर्टेन कि वी आर गोइंग फॉर अ लिब्रामेंटो बाय बैक क्लॉज हम ट्रिगर करेंगे. दैट इज 38 मिलियन, दैट वाज 50 मिलियन, लेकिन 12 मिलियन हमारा उसमें से कटेगा बिकॉज वी हैव दैट फर्स्ट सेल का जो हमारा वो रिलीज क्लॉज करेक्ट. परसेंट जो भी होता है, 38 मिलियन वी हैव टू पे. मेरे हिसाब से वो इन 2 या 3 इयर्स पे हो जाएगा. तो डू यू फील गैलेगर का रोल है या फिर व्हाट वी शुड डू? Gallagher का sure role है because I think Gallagher the way he has been performing in Crystal Palace, proper box to box midfielder. I think he reminds me of a younger of the next generation वाला Kante. ठीक है and I think Gallagher can, it's a huge praise for him, but I think Gallagher वैसे ही रोल में खेल रहा है Crystal Palace में. He's equally responsible defensively and he's equally Attacking. responsible attack in an attacking sense. So I think Gallagher makes for a complete package and a seamless fit to our 11. Gilmore. Billy Gilmore is again a person whom I would like to see a lot more. I think Barkley, regardless of however well he has performed, however well he performed in the last game, Barkley's time is still up because No, I'll tell but you why. still Because Barkley's position नहीं है squad में. You also know this fact. I know. Because Barkley is also getting a lot of wages, no? Barkley is earning a lot as well in terms of wages when you compare to the rest of the squad. Or when you compare to the players who are gone out on loan. Okay, with Connor, with Gallagher, or if you talk about Billy Gilmore, Barkley is earning a good amount. So I think if you free Barkley, you free that wage space as well. So from a business standpoint, also it makes complete sense. Why do you want to keep a fringe player with those wages in your squad? Doesn't make sense. ठीक है, so वो चीज Barkley will definitely go. Ampadu will go. I don't think Ampadu will have a role to play in Chelsea in the near future. I don't think so. Armando Broja, on the other hand, will definitely have a role to play But in Chelsea in the near future. has he given you some sample? Armando Broja मतलब साउथहैम्पटन खिला ही नहीं रहा है तो मैं क्या बोलूं अभी तुमको वही मतलब वही वही we predicted साउथहैम्पटन कि लिब्रामेंटो से ज्यादा ब्रोहा खेलेगा. For me personally, I did so. एग्जैक्टली But सेम I can understand Hassan Atterby क्योंकि Armstrong, Redmond and the other striker, I forgot his name, are performing all on their level best. उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चे एडम्स Che Adams, yeah, they all are giving their 100%. अब ब्रोहा की स्पेस नहीं बनी थी मेरे हिसाब से उस टीम में. Do you feel कि after January you should consider loan move somewhere else? No, I'll tell you why. Because even if he's coming from the bench, you are testing your skills against probably the best players in Europe currently. But maybe Okay, and Brighton के पास स्ट्राइकर नहीं है. ब्राइटन नहीं लेगा लेकिन ब्राइटन विल नॉट टेक. ब्राइटन का वो वैसा ट्रांसफर वाला होता ही नहीं है मतलब दे उनका ट्रांसफर बिजनेस वैसा चलता ही नहीं है कि दे प्रॉब्ली टेक they've only taken one right back from us, Lamptey. I think they were in for Livramento as well. Yeah. They were in for Livramento as well, but Southampton took him in the end. But I don't think so. From a striker sense, they will still persist on Mopai. They will still persist on probably a Trossard delivering for them, or Alongside a Cross. Welbeck delivering for them. So ये सब लोगों पे वो लोग अभी भी ट्रस्ट करते रहेंगे. So I don't think that's going to happen. But Armando Broja, I will still say, is like like the replacement for Lukaku. मतलब Not Tammy Abraham. not Tammy Abraham.
Tammy Abraham beautiful season तो भाई रोवा के लिए, but Do you feel Lukaku and Lukaku 2.0 हो सकता है टैमी एब्राहम के साथ? sorry क्या हुआ? Lukaku 2.0 हो सकता है टैमी एब्राहम के साथ? Do you Yeah, think yeah, so? कि yeah. वो Easily. 10 साल बाद हम उसको वापस हाई पैसों में ला रहे हो, Easily, 5 साल easily. बाद? मैं तो रिप्लेसमेंट भी नेक्स्ट सीजन के हिसाब से बात कर रहा हूँ. टैमी तो ओके आई ओके। एम श्योर नेक्स्ट सीजन नहीं आएगा. हाँ ठीक है, आफ्टर टैमी तो आई एम आफ्टर लुकाकू विल कम, 100% श्योर. विल कम हाँ, आफ्टर हंड्रेड लुकाकू। परसेंट श्योर. हाँ, 100% श्योर ही विल नॉट कम नेक्स्ट सीजन. बट ये वही होगा, टू जो सही बोला 2.0 ही होगा. हम टैमी एब्राहम को 80-90 मिलियन में लेंगे. नो नो ठीक वी है, हैव अ वो क्लोज ना उसके ऊपर 75 मिलियन का। 75 मिलियन. ठीक है, हाँ 75 मिलियन. 75 देखो, मिलियन में अपना खुद का ही अकाडमी प्रोडक्ट हम लेंगे. सो हाँ ये पूरा का। बिजनेस जो है ना, मतलब ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस से ही समझ में आता है मुझे कभी भी. बट ये बड़े लोग हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं वो बट बड़े स्टिल लोग हैं, वो चेल्सी तो की जान. फाइनेंसेस आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई नो, इसलिए बोल रहा हूँ बड़े लोग हैं तो वो लोग एंड जानते जस्ट हैं कि क्या वन कर रहे हैं. प्लेयर टू रैप अप, एंटोनियो रूडिगर मेरे हिसाब से चेल्सी प्लेयर ऑफ द सीजन जब से टुकल आया है, हिज बेस्ट प्लेयर अंडर हम्म, टुकल. What are you expecting him? Because the talks around him are going bigger and bigger. आप कभी हम्म. पढ़ते हो डी मतलब डी मार्जियो में या फिर इंडिपेंडेंट में, गोल में आप ये आर्टिकल्स पढ़ते हो कि यूवेंटस आर आफ्टर हिम, पीएसजी आर आफ्टर हिम, एंड मेरे हिसाब से द बेस्ट फेवरेट्स फॉर हिम बायर्न एंड रियल मैड्रिड आर आफ्टर हिम. हम्म. डू यू फील कि वो जा और रिप्लेसमेंट की भी He should टॉक्स आ रहे stay. हैं, डिलिक्ट एंड हम चेल्सी उसको वेजेस डबल नहीं कर रहे. डू यू फील उसको 200k मिलने चाहिए? He should stay बट because I think 200k, yeah, I think we should still give it to him because yeah, he we should deserves give it it. to him. Yeah, exactly, he deserves it. He deserves it. It's not probably because of his talent on the field. It's probably because of his mentality towards every game. He's It's so fight for the good. badge. His fight for the badge. He can almost be the next leader that we want to see. Matlab, after Aspilicueta, I mean, people are definitely going to say Mason Mount, but probably from a purely a leadership perspective, I think it's Rudiger. He's not I Mason Mount according to definitely. me. Mason Mount is the हाँ, captain material, मैं वो deny नहीं कर रहा, but he is not the player जो रूडिगर है. रूडिगर है, हाँ. लुकाकू है, that fight for मेंटालिटी the match. मॉन्स्टर है भाई. रूडिगर Exactly. मेंटालिटी मॉन्स्टर है. वो डिएगो कोस्टा वाली जो हरकतें करता है Yeah, ना. and he is the player you need in the back room more on the field rather than more on the field. Lampard के अंदर हाँ, भी he never posed a problem to Lampard जैसे Marcos Alonso was irritating Lampard, and हाँ. that helped players. Like many players have come out and said कि Kai Havertz और Timo Werner ने कहा कि Rudiger always made us feel like we are home, and that is what helped us to perform for Chelsea. Correct. So Correct. And that is the role of a captain as well. I yeah, mean, that just shows your leadership ability. I mean, I don't know what else does he have to probably be in the reckoning of being the captain of Chelsea after Aspilicueta, or being like, because it just makes complete sense. Even Jorginho, he अरे is यार, not the captain. I don't Yeah, hate George, but he's not captain material. no. He's not captain material. Rudiger is the next captain because वो डियो जैसे मैं बोल रहा था, डियो कोस्टा वाली जो हरकतें हैं, अनसेटलिंग द ऑपोजिशन with your passion for the badge, or with your dedication towards a certain match, or towards a phase, or towards getting those 3 points, Yeah, is amazing. That is what defines you as a leader, and I think Rudiger is that. I think we should give anything he wants, to be very honest. and talks around Delict. Delict, to fuck him, because I No, think yeah, because I Kunde. think या नहीं नहीं चाहिए भाई. मैं कुंडे तो शुरू से बोल रहा था यार. कोई मुझे बिलीव नहीं करे. मैंने बोला चालोबा है, चालोबा है, चालोबा है, चालोबा है, चालोबा है. मैं लेकिन तब राइट से बोल विंग रहा हूँ बैक, चालोबा है. हाँ राइट विंग भाई, बैक, राइट में आई स्टिल से बाय बैक लिवरमेंटो. ठीक है, लेकिन वो गेट नहीं हिम होगा ना. बैक, buy him back, because if we are a little bit smart, लिवरमेंटो को बाय बैक कितना है? 30 मिलियन. 38, 30, हाँ, 38. 38 का बाय बैक है लिवरमेंटो पे. Bro, the way he's performing for Southampton right now, It is ठीक of है, the place in Chelsea starting there. yeah, and up until next season के start तक, he would have gotten his value up to 38 million वैसे भी. ठीक है, in this transfer market, if you look at the deals that are being done, he would have gotten his value ऊपर से इंग्लिश up until 38 million. ऊपर से he's in English. You got Arsenal got banned by 52, 55. क्या बोल रहे हो? मतलब अभी क्या ही बोल सकते हैं. ठीक है, तो अगर 38 मिलियन में फिर भी independently I'm looking at him as a player. अगर I'm just looking at him as a player, not as an academy product as well, just looking at him as a player, we're getting 38 million for Liverpool on that form. I'm like, take him.
what is your problem? Just take him. It's okay. Consider that a mistake has been made. Take him. Simple. Great. So this is, I think, from us from today. A great international break. Great तो नहीं बोलूँगा. Still enjoy your international break if you can. And actually enjoy the international break. नहीं तो IPL देखो. Indian fans, you have a lot to worry about in cricket and other fields as well. So for this, thank you, Adidev, for coming again. Thank you. Thank you. Great chat to have with you. So with this, we'll be signing off at from the Football Parliament podcast. Thank you.